Hello, namaste, salam alaikum, sat sri akal, everyone. So this is the second part of my time at Pierram's home in Ahmadpur, Punjab, Pakistan. So we returned from the farm, and as soon as we returned from the farm, we saw that चाय की तैयारी हो रही थी, and also मैं थोड़ा किचन की क्या क्या सामग्री है वो भी मैं देख रही थी, and प्रेम भाई ने वो भी एक्सप्लेन किया कि क्या क्या चीज़ें हैं नॉर्मली किचन पे. और ये है सब्जी में मसाला घी है, वगैरह घी है, इसमें मिर्चें, मरचा। इसमें हल्दी आ गई, अच्छा, इसमें नमक आ गया ओके और ये वाली चीनी है. ओके। इसमें पत्ती जिसे बोलते हैं, किस चीज के लिए? चाय के चाय लिए. का पत्ता, हाँ जी, हाँ, चाय की पत्ती है पड़ी हुई. ठीक है। और ये जो सब्जी में डालने के लिए. ओके, वो अभी लाया वो? जी बिल्कुल, अभी लाएगा. अच्छा, ओके। वाओ, ये तो काफ़ी सिंपल है एंड काफ़ी इम्प्रेसिव भी है बिकॉज इन दिस डे एंड एज लाइक किचन्स आर फिल्ड विद प्रोसेस्ड स्टफ व्हिच इज़ रियली बैड फॉर यू. सो यहाँ सब चीज़ें काफ़ी हेल्थी है. सो दिस इज समथिंग आई एम गोइंग टू टेक बैक विथ मी. Keep it simple. So here I am having chai with the freshest possible milk. I don't think I've ever had such fresh milk straight from the cow in my life. And it definitely tasted delicious. You could taste the difference in this type of fresh milk and, the stuff we get in the supermarket. And to be having this tea and sweets in this open air living room with, a beautiful view of the farm and everything was so extraordinary, honestly. And it was time for the next part of the daily So program. guys, now they're going to start cutting the grass for the cows and the goats and everything, and they do it. It's mechanized with the engine of a two-wheeler. घास काटने का बहुत क्लेवर तरीका है to simplify the process. Anyway, it's my turn now to do some work, and I was getting the grass together to feed the cattle. मैंने सोचा कि ये बहुत आसान काम है, पर फिर भी भी नहीं है. आदत नहीं है. And ओह माय oh, गॉड. clumsy. तो ये काम रोज करते हैं आप? जी बिल्कुल, रोज अच्छा, एक दिन में 4-5 बार. 4-5 बार? जी. वाह। बस बस बस. Guys, that was the proper way to do it. Obviously, he's far more experienced than I am, and even these cows are so calm and so quiet, just like the rest of the atmosphere here. So after the cattle feeding, it was time for me to try the next activity, which was cooking on a chula, which was super exciting. However, one thing I noticed is, in fact, they told me, is that when it comes to things around the house, women just do it. That's it. It's understood. They do it happily. There's no complaints or any kind of modern day complaints about everyone has to do everything. So cooking and washing clothes is strictly women's department. बहुत अच्छा है। और जनरली ना लेडीज साथ में बैठ के ये काम करते हैं, तो बहुत लाइक हंसते खेलते काम हो जाते हैं यहाँ। जी. अब चम्मच घुमाइए. हाँ, लकड़ियाँ डालें इसके नीचे. एक एक ना निकाले ना. ज्यादा डालना है क्या? जी ज्यादा डालें. अभी खाने का वक्त आ गया, तो let me tell you how it was. नहीं, तो सब है गर्मा गर्म, तो रोटी और सब्जी, आलू और पता नहीं वो सब्जी जो हमें खेती से लिया था, फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश है। तो मैं बताऊंगी कैसा है, मैं सच ही बताऊंगी। मुंह में तो पानी आ रहा है। वाव वाव बहुत अच्छा है। और ये रोटी भी एकदम सॉफ्ट है, बहुत अच्छा है जी। Actually, that thing was super tasty. And you saw they had just like 5 or 6 ingredients in the kitchen, and even with that, it was so tasty. Actually, इसमें एक बात है, ढेर सारा घी था इसमें, so that was what was making it so extraordinary. And मेहनत करने वालों को घी खाने को बनता है, so
So they gave me the special seat outside, and all the ladies and children were eating inside. So after I finished eating, I went inside to see and have a look what they were up to inside, and they were all eating and watching, interestingly, Telugu film, dubbed in Hindi, of course. So after, lunch, it was just sort of spending some time gupshup with the uh, other family members, mostly men. So they were all really curious to know why I came here and if I was married or not. And, they were so surprised to find out that I was not married and they want to know why. But one interesting thing is that they never judged me. I never felt judged even for 1 second, but they were definitely very surprised. And that's totally understandable because from their perspective, the women get married like as teenagers. And also, one more interesting thing for me is that they still have arranged marriage in the true sense. So the parents talk and agree, and then the boy and the girl get married. And the first time they ever see each other is after the wedding. So until then, they don't even see each other. What do you think about this system of marriage? Let me know in the comments. When I asked the people that were married, both the husband and the wife, they were all really happy. I mean, for them, this was the norm. It wasn't unusual, and they seemed to be like happily married as well because they think the parents know best. They would never make a decision that would go against us. And generally, here there's a strong sense of community, and that's their biggest strength. So, which is different than in the cities in the modern world, where strength seems to be more in your job, your salary, your qualifications. All these things are like the strength. But here, having one another, that seems to be their biggest strength. So, Mooney Vlogs also, he's a cousin of Pierre Ram, and he wanted me to do a little bit of an interview for his channel. So then I answered some of his questions for his YouTube channel, and then it was time for us to go meet some of the relatives. So the relatives are just like a short scooter ride away, and to be riding on the scooter was far more intimate with both farm on either side was so lovely. इस गाँव में भी बहुत सारे उसका रिश्तेदार है एंड इसका फील एंड एटमॉस्फेयर ऑलमोस्ट सेम ही था तो लेट चलो मिलते हैं हाय बाय करते हैं एंड सी व्हाट हैपेंस हियर ये आपके रिश्तेदार का गांव है? जी बिल्कुल। ठीक है। और चलो मिलवाते हैं सबको। आपका नाम? मेरा नाम जानू। जानू। जानू? जी जानू। जानू राम। जानू राम। अच्छा नाम, प्यारा नाम। सिंपल नाम है। मेरा नाम पप्पू राम। पप्पू राम, नमस्ते पप्पू राम। तो आप दिन का शायद काम वाम कुछ खत्म हो गया और आराम कर रहे हैं सब? जी आराम रेस्ट कर रहे हैं अभी। जी रेस्ट कर रहे हैं। तो ये I really enjoyed the afternoon program actually because it was just like people chilling and hanging out and resting like this. अच्छा, tea is almost ready. Well, after having tea, it was time to go off to the next village and make more relatives there. आप थोड़ा इंट्रोड्यूस करिए। जी मेरा नाम है जी मुनी व्लॉग और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम तो आप जानते होंगे कि मुनी व्लॉग है। तो ये मेरा घर है और ये मैम जी आई हैं इंडिया से, बेंगलोर से। तो मैं आप मेरे घर का विज़िट कराऊंगा। हाँ। तो ये है जी हमारा मंदिर। ओके, ये है मंदिर और यही स्टाइल, ये केव स्टाइल का है। तो बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। और मैं अंदर जा सकते हैं इस वक्त? जी बिल्कुल। तो ये सब ऑलमोस्ट एक ही स्टाइल का है जी ना?
तो फर्स्ट कौन बनाया इस स्टाइल का घर? सब जस्ट एक ही बार बने हैं सभी। वो सेम टाइम में? जी सेम टाइम। ठीक है ठीक है ठीक है। हमारे दादा बुए का एक थे ना, तो उनके हाँ, 6 बच्चे थे। अच्छा। तो 6 की 6 शादी हुई थी, पहले किसी और जगह रहते थे। ठीक है तो ठीक है। इस जगह में आए तो सबसे पहले इन्होंने 6 जितने भी कोठे बनाए हुए हैं, मकान रूम जितने भी हैं, एक ही दिन बनाए हैं। 3-4 दिन लगे हैं बनाने में, 1-2 दिन लगे हैं छत वगैरह डालने में, तो फिर तैयार हो गए तो फिर आगे तो ये so guys, this is supposed to be a family home, but really it's a family village. There's so many people here, so much cattle, so much everything. So basically, starting from the grandfather's generation and all of their descendants, they're all over here. And every house or sort of independent room that we saw belongs to one family, and as and when the families are expanding, they keep building more and more rooms to accommodate, so they're not leaving anywhere, they're all living together. It's a fantastic sense of community, and you can just hear children, and there's a lot of positive energy in this place. So this is how the evenings are spent, chilling out in the open air, everyone getting together, talking about life and all kind of things, important, not important. Great. So मैंने एक रात स्टे भी किया यहाँ, एंड सब ऑलरेडी उठ गए एंड they've gone to get started for the day, एंड मैं और ये बच्ची लास्ट थी, एंड ये है सुबह सुबह का नज़ारे. सो आई डिसाइडेड टू स्टे बिकॉज यू नो मुझे फिर ये मौका नहीं मिलेंगे, सो आई थॉट पूरा ये व्हाई नॉट एक्सपीरियंस एवरीथिंग जब चांस है. सो दैट वाज द रीज़न फॉर माय डिसीजन. एंड सब एक साथ सोते हैं, लेडीज, यू नो द एंटायर फैमिली, बच्चे, एवरीबडी एक ही कमरे में सोते हैं, एंड यू नो इट्स सच अ लवली सॉर्ट ऑफ कोजी एटमॉस्फेयर. एंड अभी मैं पानी मुंह धोने के लिए जा धरती से रही ही आती है, तो ये है धोने का, मुंह धोने का, नहाने का, यही पानी है. तो So actually everyone was sitting in the kitchen because this is also a nice way to get warm in the morning. तो जब मैं लेडीज के साथ बैठी थी इन द किचन, देन प्रेम बाय केम एंड सेड दैट यू नो सम पीपल हैव कम फ्रॉम द विलेज, एंड उसको पता चला कि बाहर से कोई आया है. तो देन आई थॉट वेल ठीक है, यू नो आई डोंट माइंड मीटिंग देम. एंड उसने बोला नहीं, एक्चुअली इट्स नॉट जस्ट मीटिंग, they want to interview you for their own YouTube channel. तो I was quite surprised. I was like, what? Interview me? तो मैंने बोला ठीक है, you know, I'll be helping them, and you know, मेरा भी सेलिब्रिटी होने का शौक भी पूरा हो जाएगा इसी बहाने. दिखावा पॉइंट, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने ज़्यादातर अपने चैनल पर हिंदू कम्युनिटी को एक्सप्लोर किया है, तो आज मामला थोड़े मुख्तलिफ हैं. आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो कि इंडिया से पाकिस्तान विजिट करने के लिए आई है. ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान में मैं अबू धाबी के एयरपोर्ट में वेट कर रही थी. मेरा थोड़ा नर्वस फील कर रही थी, नॉट बिकॉज ऑफ द पीपल, मुझे लगा वो एयरपोर्ट में वो क्या होगा, तो ये थोड़ा मैं टेंशन फील कर रही थी. ताकि लोग का मेहमान नवाजी फर्स्ट क्लास है. सो गाइज, इट्स ऑलमोस्ट टाइम फॉर मी टू लीव हियर. यहाँ जाने का वक्त आ गया, और मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा, मैं कभी भी नहीं भूल सकती हुई एक्सपीरियंस, और आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई हैव दिस अपॉर्चुनिटी एज वेल. और सब है यहाँ मुझे सी ऑफ करने के लिए, और हम जाएंगे बस स्टॉप की तरफ, एंड अहमदपुर जाएंगे और वहाँ से बस पकड़ना है लाहौर के लिए. तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज.